Assalamu alaikum and a very warm welcome. You're watching an exclusive Tribune podcast in collaboration with Novartis. Ask any young girl and she'll tell you that pink is most probably her most favorite color. बचपन से ही छोटी बच्चियों को अगर आप कोई खिलौना दिलाते हैं, कोई ड्रेस दिलाते हैं या उनके कमरे को भी डेकोरेट कर रहे होते हैं तो पिंक फीचर्स वेरी प्रोमिनेंटली. बट व्हेन इट कम्स टू द मंथ ऑफ अक्टूबर, द सेम कलर जो कि आम तौर पे छोटी बच्चियों के साथ, इनोसेंस के साथ, फेमिनिनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, बिकम्स द कलर ऑफ करेज एंड मोटिवेशन. ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की. वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन अबाउट पिंकटोबर दैट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ब्रेस्ट कैंसर बेटर. एंड परहैप्स इसके इर्द गिर्द जितना भी स्टिग्मा है, मिथ्स हैं, लोगों की एप्रीहेंशंस हैं, वील बी एबल टू मेल्ट देम अवे टुडे. क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही एमिनेंट पैनल. ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं डॉक्टर रुफीना सूमरो, हु इज़ अ रिनाउंड ब्रेस्ट सर्जन एंड द हेड ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी इन हर हॉस्पिटल. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुफीना फॉर बीइंग हियर. और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अज़मीना ताजदीन, हु इज़ ऑल्सो अ रिनाउंड कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसेस एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल. थैंक यू सो मच डॉक्टर अज़मीना फॉर बीइंग हियर. सबसे पहले अगर हम बात को वहाँ से शुरू करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आई सी अ कंसिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सेंडिंग आउट दिस प्रोजेक्ट दीज मैसेजेस एंड अवेयरनेस. डॉक्टर रुफीना, क्या कोई तब्दीली आई है? हैव यू सीन एनी इनकरेजमेंट in the patterns, in the detection, in reporting in the last 5 years? I think yes, over the last few years awareness sessions काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं. We see more and more patients. That does not mean के increase in number because we are sitting in the city of Karachi that caters to the interior of Sindh also, and we have lot of people from Balochistan, even Afghanistan, Iran. So I think बहुत ज़्यादा number of patients have gone up, and maybe this could be because of more patients being diagnosed. That does not mean कि incidence बढ़ रहा है because awareness है, more and more people approaching the doctors. Okay. But what I have seen is कि in the last few years जितना हम देख रहे थे, we had a significant chunk of patients that we were seeing in stage 4, which means कि बहुत advanced stage when the cancer has gone beyond the boundaries of breast. That number in my own data, I am not talking about in own data, that number has gone down. Wow. And stage 2 जब वो सिर्फ local regional relatively early disease है, that has slightly risen up. So I would see that yes, in the last 5 years whatever we have been talking about, slight impact है, not to the extent that we wish to see. But it is still encouraging, right? It is. Although this is not formal data, but it's still very encouraging. और ये एक मेरे ख्याल में बड़ी अहम बात है कि ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, अर्लियर स्टेज पे रिपोर्ट हो रहे हैं. Another very unique thing about Pakistan, and this one I want to bring to you, Dr. Azmina. अगर मैं पूरी दुनिया में देखती हूँ तो 50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है. पाकिस्तान में ये जो उम्र है वो बहुत यंग एज में लोगों को डायग्नोस हो रहा है. यहाँ कोई तब्दीली आई है और इसकी आप बड़ी वजह क्या देखती हैं? यही हम बात कर रहे थे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर. जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ना सिर्फ एग्रेसिव होता है बल्कि यंग एज में भी होता है और इसके साथ जेनेटिक्स भी एसोसिएटेड होते हैं. जेनेटिक्स का मतलब ये है कि इफ़ योर बॉडी इज़ प्रोग्राम, आपका DNA जो है वो किसी तरह से डैमेज हुआ है या चेंज हुआ है तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जीन जैसे कि BRCA जीन है और a lot of people have heard about Angelina Jolie's her ordeal or her encounter. Okay, so her disposition. हाँ. सो BRCA जीन्स होते हैं और इसके ये जीन के बारे में आपने सुना होगा, लोगों ने सुना होगा कि एंजेलिना जोली को भी ये जीन अफेक्टेड है, उसकी मदर को, उसकी ग्रैंड मदर को भी था. तो व्हाट शी डिड, शी वाज प्रोएक्टिव अबाउट इट एंड शी अंडरवेंट mastectomy, double mastectomy, because these people are at a very high chance of developing breast cancer and cancer of the ovaries. So when there is a genetic predisposition, then the cancer tends to occur at an earlier age. And हमारे यहाँ कोई
ऐसा कॉन्सर्टेड एफर्ट नहीं है जहां हमारे पास सब टाइपिंग और ट्यूमर रजिस्ट्री हो जहां के हम आइडेंटिफाई कर सकें एग्जैक्टली एज टू व्हाई द एज हैज़ माइग्रेटेड टू अ यंगर एज गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर. आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. लेकिन साथ साथ अगर हम क्योंकि इस वक्त हमारी बहुत ही एक वाइड ऑडियंस है एंड वी वांट टू रेज अवेयरनेस, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग. आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें, स्क्रीनिंग की रेगुलर आदत आपको हो. डॉक्टर रफीना, व्हाट हैपन्स लाइक इफ़ अ वुमन ड्यूरिंग सेल्फ एग्जामिनेशन डिस्कवर्स अ लंप एंड शी कम्स टू यू, then what are the next steps? I think just to highlight, when we see 10 women with lump, maybe one has breast cancer. So ye the fear that if I have lump, it is breast cancer, nothing else. So I get late night calls कि सुबह मुझे operate कर दे, मुझे lump नज़र आ गया है. So that fear कि yes, lump is one of the commonest presentation, but that's not the only presentation. So when we see a lump, I think what we generally call it a triple assessment. हम clinicians by our clinical examination make a significant estimate कि what it is, but obviously can never be 100% even in the experienced hands. Then we take help of imaging like young girls में ultrasound or mammogram, and if we really think it is suspicious to confirm, we do a biopsy. And I think the moment I say biopsy, everyone freaks out कि biopsy means cancer is spreading or it will spread with this. यानी जो एक तस्वुर है, विजुअलाइजेशन लोगों के जहन में ही आती है कि द मोमेंट आपने लंप को प्रिक कर दिया वो फैल जाएगा. But what is strange is a biopsy with a needle, the belief is कि वो नहीं फैलेगा, मुझे ऑपरेट कर दें. तो when we cut it with a knife, that will also a metal. So how is that कि one metal is spreading, the other metal is not spreading? And I would like to probably at this point take this opportunity to pass this message on to everyone, which we all face, कि surgical excision should not be the primary modality of confirming a cancer. हमेशा biopsy होनी चाहिए. As Dr. Azmina, we get triple negative. We only come to know once we send the specimen for that, and in a lot of situations our oncologist colleague and we decide कि नहीं इस patient को तो पहले medically treat करना है, फिर surgery करनी है. तो how do we know if we are operating? And then it becomes a futile exercise because जिस तरीके से निकाला हुआ होता है कि it becomes a challenge for the surgeons to preserve that breast, because the intent of cancer surgery and just for diagnosis are totally two different things. So एक young girl में आपने upfront surgery कर दी, तो I think you are taking that patient away from breast conservation surgery. So I think biopsy से डरना नहीं चाहिए, because biopsy gives us lot of information whether it is cancer, not a cancer, what type of cancer, how do we plan our management, whether oncology colleagues are giving her medical management first or we need to operate first. So there are a lot of things that we need to nowadays decide how are planning the management. Right. It is one comprehensive plan and then we execute that plan. So I think you've said a few very important things. एक तो सबसे पहली चीज़ कि हर लंप कैंसर नहीं होता, उससे डरना नहीं चाहिए. घबराहट में या डर के मारे लोग दो चीज़ें करते हैं, या तो डॉक्टर साहिबा को कॉल करके कहते हैं कि कल सर्जरी कर दें, आई वांट द लंप रिमूव्ड, या फिर जो उसके बाद आने वाले टेस्ट होते हैं उससे घबरा जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक बायोप्सी. लेकिन डॉक्टर आज़मीना, जब हम बात करते हैं सर्जरी की, ऑफ कोर्स इट्स यू नो इट इंड्यूसेस अ लॉट ऑफ फियर, लोग घबराते हैं. आप क्या समझती हैं कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो, मिसाल के तौर पे सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर में डिटेक्शन हो, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं लोगों के पास उस वक्त? सो आई टेल यू समथिंग, हम जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने केसेस जो है मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड में डिस्कस करें. ओके, so stage is not the important factor now. The biology, the nature of the tumor is the most important factor. जैसे मैंने कहा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, छोटा भी होता है, स्टेज 1 भी होता है, उसमें हम ऑपरेट नहीं करते. लगता तो है ऑपरेबल और बहुत आसान से जो है कंजर्व कर सकते हैं, बट द इंफॉर्मेशन दैट वी obtain when we give them medications, chemotherapy and targeted therapy will tell us about the trajectory of the disease, will tell us how we have to modify our treatment. Once the patient gets the surgery, do we have to include something else based on how they respond, or we have to continue the same treatment. At the same time, जैसे मैंने बताया, so I think
in my conversation today, I'm emphasizing a lot on triple negative breast cancer because we started with this question about the youth, the younger ones getting it, is that in those patients it's also important to get genetic information, because that gives us time also to plan the kind of surgery. So let's say about 5-10% of the patients who come to us have a triple negative, have some genetic alterations which have given rise to this cancer in the first place. Conserving the breast is going to be the solution for the cancer, but they still have a long-term chance of getting cancer in the same breast and in the opposite breast, in the ovaries also. Okay, so that also gives us the opportunity to see कि अच्छा ये रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है और हमें टाइप ऑफ सर्जरी किस तरह से मॉडिफाई करनी है. शुड वी स्टिल गो फॉर अ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और शुड वी डू अ टोटल सर्जरी? बिल्कुल सही. So these are very important things, and fortunately, you know, all these guidelines are available to people who are willing to look at it. So just to reiterate what you just said कि कोई एक शू साइज फिट्स ऑल वाली सिनेरियो नहीं है. अगर आपकी डायग्नोसिस होती भी है ब्रेस्ट कैंसर की, देन देयर इज़ अ पैनल दैट सिट्स डाउन एंड लुक्स एट योर यूनिक केस कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए. इज सर्जरी एन ऑप्शन? इज कीमोथेरेपी एन ऑप्शन? यूजली क्या ये मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लान्स, डॉक्टर रुफीना, इज देयर अ चॉइस गिवन टू पेशेंट्स एट टाइम्स? पॉकेट साइज विल रियली मैटर? आप क्या कहती हैं? It does, because whenever patient comes, as you said, कि हम एक multidisciplinary team में decide करते हैं, ठीक है. and there are times when we really can. Patients के पास तो fear है, वो कहते हैं operate कर दो, but as you said, we look at the biology that helps us कि पहले हम इसको कीमो दे रहे हैं, पहले सर्जरी कर रहे हैं. At not only that कि during chemo सिर्फ oncologist follow करें, surgeons also do follow, and we have a close collaboration whether it is in the same institutes or in other institutes. Like if my patient is going to Dr. Azmina, the patients will come to me also. She will also tell me कि your patient is responding, not responding, and so we will communicate about the patients. And usually treatment plans we share with each other, all the surgeons and oncologists and other stakeholders. Patients are on board, and as she said, there are situations when even size is early or even slightly bigger, but it's a good biology, we choose to operate first. And in that, पहले जो होता था एक fear कि breast cancer means you are removing the breast and that's the first treatment and clearing everyone's underarms. It's no longer the same. We can conserve breast in a significant number of patients. We are now equipped and trained enough to do a lot of plastic procedures, like breast surgery is a specialty now. Okay, we do little plastic surgical procedures to give the same shape, size to the women and conserve the breast. So reconstruction is an option. वो उसका इसका built-in plan. Yeah. Even if we are conserving the breast, एक तो reconstruction है when we are removing the breast, you reconstruct the breast at the same time. Other is even you are preserving a breast. That does not mean that you leave a little hump in the patient's breast and you say I have conserved the breast. Giving it a normal shape, matching with the other side. So we have lot of options available. Second thing which is there, and it is now practiced in quite a significant number of centers in Pakistan, it was a norm way back कि जिसको भी breast cancer है, whether underarm के glands में disease है या नहीं है, let's clear it up. Nowadays we check whether there is a disease in the underarms or not. Even before starting chemotherapy, even if the patient had before starting chemotherapy, we check back कि chemotherapy के response से breast में क्या फ़र्क आया, underarm में क्या फ़र्क आया. We prove it, we select that note, send it to that pathologist, confirm it, disease है या नहीं. If disease है तो underarm के glands को clear करेंगे. Why are we so focused and concerned about it? Because underarm के glands जब हम clear करते हैं तो this arm is, whatever arm that we are operating, is prone to getting swelling, edema. So why should we unnecessarily subject these women for this potential risk when there is no disease in the underarm? So we super select. आपकी functionality of the limb is at the risk of getting affected. तभी आपके पास options हैं. Now these are the surgery options we're talking about. And that's what I'm saying. If we look at my data, 50% of the women, even in Pakistan, whatever we may say,
do not have disease in their arms. So if we overdo that, probably we are risking those 50% of the patients by doing unnecessary critical surgery. information that you're getting on this podcast. आप आम तौर पे जो हमारे जहनों में सवाल होते हैं, we're trying to sort of get an answer to that. मुझे ये बताइएगा, before we talk about the present day chemotherapy, Dr. Azmina, why is there such high mortality in the low income strata? यानी एक दफ़ा यानी इज़ इट बिकॉज लोग इलाज नहीं करवा रहे, इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, इलाज बहुत महंगा है, ये जो जहन में आता है, यही वजूहात बनती हैं आपके ख्याल में? राइट, सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट. आप जैसे बता रहे हैं कि वो एक तो डिलेड डायग्नोसिस होती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनको अलाउ नहीं करता, प्लस उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा होता है कि दे आर वेरी शाय, देयर इज़ अ टैबू अबाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. एंड देन बहुत दफ़ा आते हैं हमारे पास एजुकेटेड क्लास भी होती है, बट दे डोंट वांट टू बॉदर देयर चिल्ड्रन. कहते वो थका हुआ आता है, पूरा दिन ऑफिस में होता है, हम कैसे उनको परेशान करें. एंड देन until one day they are sitting at the dinner table and somebody notices कि इनका शर्ट पे तो धब्बा आया हुआ है, तो फिर वो लेकर आते हैं अपने loved ones को. तो सो ये वजूहात हैं कुछ डायग्नोसिस की. प्लस बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इलाज अच्छा हो. बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास प्लान लेके जाते हैं, फिर वो बजटिंग करते हैं, पॉकेट को देखते हैं कि हम किस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और कहाँ हम इलाज इसका वही इलाज करवा के और फिर आपको बीच में इंटरम दिखाते हैं, बिकॉज दे फील दैट दे आर गोइंग टू अ गुड हॉस्पिटल, they are going to somebody who is at least going to offer them the treatment according to the guidelines. So, and then a lot of people are unable to continue. So we at our level facilitate whatever we can do so that they can complete their treatment without any hiccups. And usme ye hai कि the private hospitals are out of budget for a lot of people. So they go to government hospitals, and there are very good government hospitals. And there are a lot of new faculty, junior faculty, जो कि इन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, और they are providing good care to these people. And there are other not-for-profit options available as well. बिल्कुल, पे लोग जाकर बिल्कुल या तो कम पैसों में या बिल्कुल मुफ्त इलाज भी करवा सकते हैं. But Dr. Azmina, when we talk about chemotherapy, मेरा हो सकता है एक बहुत ही dated reference हो, but in the late 90s and the early 2000s दिखाते थे कि कीमो जिसकी हो रही है उसको बहुत ज़्यादा isolated रखना है, making sure that the environment is extremely sterilized, risk of infection बहुत ज़्यादा है. लेकिन आजकल मैं कई लोगों को notice करती हूँ, they go in for their chemo, it almost feels like an afternoon procedure and they come back to work. What has changed? आई थिंक जो द काइंड ऑफ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं, जो हम एंटीएमेटिक्स देते हैं नोज़िया वॉमिटिंग के लिए, क्योंकि कीमोथेरेपी के साथ there's hair loss associated with it, so we have cooling caps now available and they are effective to some extent. So ये एक बहुत बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट है ख़वातीन के लिए कि किसी तरह से अगर बाल प्रिजर्व हो जाए, इनकी डिग्निटी, इनका अपीयरेंस प्रिजर्व हो जाए, so they can withstand a lot of side effects that they are going internally, right? तो एंटीएमेटिक्स जो होते हैं हमारे नोज़िया मेडिकेशंस वो बेहतर हो गए हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिकेशंस बेहतर हो गई हैं, और एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो बेहतर हो गई. बट द थिंग इज़ वी सेलेक्ट आवर पेशेंट्स वेल फॉर द कीमोथेरेपी बिकॉज दीज आर टॉक्सिक ट्रीटमेंट्स. Selection in the sense that we screen everybody for diabetes, we screen everybody for heart problems. A lot of diabetics, every other patient is diabetic and they have poorly controlled diabetes. So we make sure that we have a consultation with the endocrinologist to make sure that anything which is stress related, chemotherapy related, जो इनके spikes आते हैं शुगर में, वो control हो जाए. और हर चीज़ डायबिटीज़ की वजह से मैग्नीफाई हो जाती है. छोटा सा यूरिन इन्फेक्शन सेप्सिस बन जाता है, छोटी सी ब्रोंकाइटिस निमोनिया बन जाता है. So you have to guide your patients. Absolutely. Extremely carefully. And then we never treat somebody who will not walk to the clinic. So if somebody is on a stretcher or somebody's managed to get on the wheelchair with help and somebody's performance status is not good, those are the patients who are not good candidates for treatment. I also wanted to, maybe spend a little time on the emotional journey of it. डॉक्टर रुफीना, अक्सर जैसे हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं कि आपको कोई भी सदमा या बड़ी या बुरी ख़बर मिले तो पहले आप डिनाइल में जाते हैं,
and then you're fighting with nature, with God, you're complaining, and eventually acceptance comes, and through that acceptance you're able to unlock a lot of courage. आपने क्या पैटर्न देखा है और इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं? हाउ कैन देयर बी इफेक्टिव सपोर्ट फॉर अ कैंसर पेशेंट? आई थिंक ये जो साइकिल बताया है, दिस इज़ व्हाट वी फेस थ्रू एवरी डे. सो I think for me, because we are the surgeons, we diagnose and we break the bad news. So breaking a bad news, I have seen in my younger age, people falling on the floor. So how you break a news is very challenging. And I think ये phenomena west और east में बहुत change हो जाता है. यहाँ आपने अकेले खातून को पहले बता दिया तो फैमिली वाले आपको माफ़ नहीं करेंगे. So you have to take everyone, हर family के dynamics देख के आपको. And other thing I have learned, they know what is going on. But अगर आपने बोल दिया आपको breast cancer है, कैंसर का वर्ड बोला मेरे पास हम उसके पास गए और छुटते ही बोल दिया आपको तो कैंसर है. So you have to break हाँ I'm concerned about it. Although I can probably very well tell 100% कि this is cancer, but you don't have to हाँ लग रहा है, let's do the biopsy. So you tell them that this is it till you have a biopsy proven, although you know very well what it is like. And then you have to probably share it with some loved one जिस पे वो trust करते हैं उसके साथ बैठा के. And I have seen them कि those families who have support, those women जिसको husband इस male member का साथ खड़ा है, the journey becomes relatively easier. एंड जिनको घर जाके कीमो लगा के वॉमिटिंग करते हुए सास ने बोला आज आपको रात का खाना आपकी बारी है, आपके पन्ना बनाना है, एंड आई विटनेस दिस. और ये होता है इट बिकम्स एक्सट्रीमली पेनफुल. एंड इस वजह से फैमिली सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड जैसे हमारे पास और सपोर्ट ग्रुप्स हैं, व्हेन दे गो एंड दे टॉक टू समवन, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस समवन हु हैज़ अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, एंड आप जब भी देखेंगे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, ओके आप फलानी जगह वाज इट, कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट, समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस दिस थिंग, इफ़ यू टॉक टू दैट पर्सन इट गिव्स यू लॉट ऑफ सपोर्ट. सो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर से बात करो हु हैज़ विटनेस दिस थिंग. देयर आर टाइम्स इन माई अर्ली डेज आई हैड टू लिसन दैट आप तो रोज़ ही देखते रहती हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है. बट ऑन द अदर हैंड मैं उनको ये बोलती हूँ कि यू are diagnosed once. I am being diagnosed with breast cancer 10 times a day every day. So yes, you are a human being, you are traumatized when you see someone crying, going through a difficult journey. But आप जब भी किसी कैंसर सर्वाइवर से बात करोगे, and I have seen जिनको मैं कन्विंस नहीं करूँ, वो हमारे पास एक कैंसर सर्वाइवर्स का ग्रुप है नीचे सपोर्ट ग्रुप, उसके साथ जब वो बैठ के बात करती आती है उनकी रिसेप्टिविटी जो है ना चीज़ों की बेहतर होती चली जाती है. देन दे आर लॉट ऑफ नाउ सपोर्ट्स. एंड एक हम सफ़र एक somebody who had a wife had a breast cancer, they have started this, you just come, you need someone who is actively listening to you. And not only cancer patients but उसकी family भी सफ़र कर रही होती है. That is also कि न सिर्फ patient को they also need support to help that patients. And if you see that, but once your journey is over, your treatment ख़त्म हो गई and maybe आप सिर्फ एक pill पे हैं जो ले रहे हैं, these very same women survivors जो है ना, they are ready. आप मेरे कमरे के बाहर बैठे हुए बोलते हैं इसके पास ये जा रही है ना, इसकी सपोर्ट फाइनेंशियली मैं करूँगी, इसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि दे बोथ वर बीइंग ऑपरेटेड ऑन द सेम डे, दे बोथ वर शेयरिंग देयर फियर्स विद ईच अदर. फॉर मे बी उनको कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कीमो देनी थी, अदर लेडी फेल्ट कि मेरे पास पैसे हैं, इसके पास नहीं, दे कम बैक टू मी, उसके पास वो थे, प्लीज उसको बताना नहीं, आई एम विलिंग टू हेल्प. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी यू दैट इज इट. सो आई एम नॉट सेइंग कि इट इज ऑल नेगेटिविटी. When we share our fears, our worries with someone, there are people who are willing to help you psychologically, emotionally, financially, in whatever ways. That's the beauty of it. Like at the end of the day, it's a human bond. आप किसी भी तकलीफ से अगर गुजरेंगे तो आपको कोई ऐसा ज़रूर मिल जाएगा. ख़ास तौर पे there's a sisterhood that comes together, or there's a community that comes to your rescue. But Dr. Azmina, same question. अगर मैं आपसे कहूँ कि you're confirming a person's worst nightmare, यानी जैसे उन्होंने कहा कि हो सकता है अंदाज़ा हो कि हाँ भाई ये कैंसर की तरफ बात जा रही है, बट एक होप ऑफ होप्स होती है ना कहीं कि नहीं हो सकता है ना हो.
What is your experience when you break the news? अब are people stronger? और जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर रुफीना ने कि who are the women who are able to face it with a lot more strength, उनके में और बाकियों में आप क्या difference देखती हैं? So the professional women, the professional women who want to continue working, they are much willing to accept that. And like you said, people go through phases, right? पहले denial होता है, फिर anger आता है, फिर bereavement होती है, bargaining होती है, अच्छा मैं इतनी नफलें पढ़ लूँगी, ये हो जाएगा तो नहीं होगा, मेरी दूसरी रिपोर्ट ठीक आएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर आहिस्ते जाके जो है वो एंड में जाके एक्सेप्टेंस आती है. सो एवरीबडी goes through these periods for a different period of time, okay? And I think the acceptance in the professional, the working women is much sooner because they have other things to address also. So they're like, let's move on. Now what's the next step? So they're in their problem solving mode. Yes. I have a woman who comes, who bicycles every day. Only on the day of chemotherapy she doesn't. Okay? वरना वो सुबह 5 बजे bicycling शुरू करती है और 3 घंटे करती है. Okay? After that she finishes the chemotherapy and she has to go to her block printing store. So these are the women who have a lot of things lined up, okay, and who have certain objectives and goals in life to achieve. You know what it sounds like? मुझे ऐसा लगता है, I read one of the testimonials by a cancer survivor. उन्होंने कहा you get 2 lives. There's a life before cancer and there's a life that you get either during the treatment or when you're cancer free. And you learn to actually appreciate life much more. आपको realize होता है कि आपका वक्त कितना limited है, आप क्या कुछ करना चाहते थे. You break a lot of barriers that way. But importantly, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों के जहन में छोटे छोटे सवाल हैं, which I really wanted to bring to both of you. डॉक्टर रुफीना, अगर हमारे यहाँ जैसे young age में किसी खातून को breast cancer होता है, she does want to know कि how much of normalcy is going to come back to her life once she is cancer free. For example, can she get married? Can she have kids? Yes, we have many patients because कुछ हमारे पास ये हैं कि ovarian function preservation drugs पहले से ही दे देते हैं जब हम उसको treat कर रहे हैं. सर्जरी के बाद भी कर सकते हैं. It is not कि आप अगर कीमो ले ली या आपने सर्जरी करा ली तो आप you cannot conceive or you cannot have. हाँ, if they are on certain drugs, we try to give them for 5 years hormonal therapy. नहीं है तो कम से कम 2 साल के लिए हम बोलते हैं कि हाँ आप ना करें. There are times when they really want to conceive, हम उसको रोकते हैं. मुझे तो वो भी चीज़ें मालूम है. पेशेंट्स जब आप उसी पुराने वाले क्वेश्चंस पे इमोशनल वैल्यू के when I sit down, मैंने कितनी मंगनियाँ तोड़ी हैं. You are engaged and आपको the moment you are discovered कि आपको breast cancer है, ससुराल वालों को नहीं बताओ, ये नहीं करो, engagement टूट गई. So but on the other hand, I have lot of stories कि जिसकी जहाँ शादी घर वाले कराना नहीं चाहते थे, lady wanted it, that person is willing to accept that person and उसको बहुत अच्छे से ख्याल करके भी रखा है. So yes, marriage has lot of roles to play. It depends आपकी mentality सिर्फ उस खातून के साथ कैसी थी या कैसी नहीं थी, आपने ऐसे ही रिश्ता किया था या तोड़ दिया था. अच्छा, ये बहुत बड़ा फियर भी है. बहुत सारी ख़वातीन डायग्नोसिस के बावजूद या ख़ुद सेल्फ उन्होंने जब एग्जामिनेशन में अगर लम्प को डिस्कवर कर लिया है तब भी वो नहीं जा रही हैं बिकॉज स्टिग्मा है कि या तो शौहर छोड़ देगा, मंगेतर छोड़ देगा, ज़िंदगी में क्या होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई हैव सीन शौहर छोड़ देगा कि इतने अनएजुकेटेड लोगों में आप बात कर रहे थे, इतना पैसा इस पे रखा है, इतने पैसों में तो दूसरी शादी हो सकती है. That has also happened in my patients I have seen. Yes. So I'm saying we are seeing extreme examples of someone really आपका terminal stages में शादी की and उसका इतना ख्याल रखा, and on the other hand 2 बच्चों की अम्मा है but क्योंकि उसको अब कैंसर हो गया है, ये चीज़ नहीं है तो उसको छोड़ दिया. So you are seeing lot of things. It's just कि we need to be tolerant. We need to be human. We need to think of those people. What's the fault of that person जिसको कैंसर हुआ है? बिल्कुल. So we have to understand and look, people blame those ladies कि आप इसका कोई कसूर होगा क्यों होगा. So that's not her fault. Dr. Azmina, the lump sometimes people report it once it has gotten a little painful. लेकिन during treatment, pain threshold क्या होता है? How much pain does a patient experience? And what kind of pain? Are there medicines to manage that?
So the pain is not because of the lump most of the time, unless the lump is so big in size that it has ulcerated the skin and it has involved the nerves and the chest wall in such a way. तो breast lumps as such में pain नहीं होता, usually painless होते हैं. कीमोथेरेपी के दौरान एज सच पेन नहीं होता. वो कहते हैं अच्छा दर्द होगा जब इन्फ्यूजन होगा. नहीं, दर्द नहीं होता इन्फ्यूजन. रिएक्शंस हो सकते हैं, कभी कभार एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं. और उसके बाद नोज़िया, वॉमिटिंग, माउथ सोर्स होते हैं. जब माउथ सोर्स होते हैं तो उसका पेन होता है. वो हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कुछ दवाएं देते हैं, कुछ माउथ वॉशेस देते हैं, उससे बेहतर हो जाती हैं. तो सपोर्टिव मेडिकेशन साथ साथ देते हैं. एज सच पेनफुल नहीं है. कभी कभार जब हम वाइट सेल बूस्टिंग मेडिकेशंस देते हैं तो उससे बोन पेन्स होते हैं. बट अगेन यू नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी, इट्स बिकॉज समटाइम्स ऑफ द सपोर्टिव मेडिसिन. Yes. So it's like I said, it takes a whole factory, a whole village to take care of a patient at multiple different levels, you know, at the medical level, at the social, economical, financial, multiple levels हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं. होल जर्नी, जैसे आपने It's a कहा whole कि journey. पूरी कम्युनिटी, आपका डॉक्टर्स का पैनल, आपका अपना सपोर्ट ग्रुप आपको साथ लेकर चलता है. बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में आज इस फोरम से भी हम सलाम पेश करना चाहेंगे टू ऑल द कैंसर सर्वाइवर्स एंड द उनको कहना चाहिए दे आर एक्चुअली बैटलिंग अगेंस्ट समथिंग वेयर दे रियलाइज़ कि एक नहीं, आप कई फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं. डॉक्टर रुफीना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास है कि येस योर जेनेटिक्स प्ले अ रोल, जैसे आप लोगों ने कहा, एंड पाकिस्तान में प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है. बट फॉर ऑल दोज हु आर वॉचिंग, कैन वी डू एनीथिंग टू आवर लाइफस्टाइल, to the way we behave, that can lower our risk of breast cancer? See, there are many risk factors. Some maybe we cannot control, like early periods hona, late khatam hona, but there are a lot of things that we can do to at least to an extent control our or lower down our risk factors, like weight gain maybe after the menopause is one of the risk factors. Log पीरियड्स के ख़त्म होने के दौरान HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे एक्सटर्नल हार्मोन्स लेते हैं, एंड दे फॉरगेट, दे कंटिन्यू टू टेक लाइक अ मल्टीवाइटमिन फॉर इयर्स टुगेदर. दैट लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर. जो लोग जो है हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं करते, एंड जितना ज़्यादा कोई मोटा होगा उनका फ़ैट डिपॉजिट ज़्यादा होगा, और पोस्ट मेनोपॉज हमारी वो एक फैक्ट्री बन जाती है जो कि दिस इज़ अ हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर. वो ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं एंड वो होता है. तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल ले लें एंड अ बोल ऑफ सैलड एंड अ बोल ऑफ फ्रूट, आपको हमेशा एक्सरसाइजेज, मे बी अ ब्रिस्क वॉक 4 hours per week is probably healthy. So अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करें, एंड आई डोंट नो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू प्ले अ रोल कि हमारा कितना एटमॉस्फेरिक जो है पोल्यूशन है. what we eat lot of chicken which is on hormones. The milk we drink, lot of hormones are being given to those animals to produce more milk. So I think ये environmental factors do play a role, and genetic factors maybe it is present in 10 to 15% of the population. But I think main thing is हमारा environmental factors which play a significant, our lifestyle which plays a significant role. अच्छा, I noticed that there is one apprehension, और ये सवाल आमतौर पे नहीं किया जाता. डॉक्टर आज़मीना, if a woman in the family has breast cancer, तो हम ये कहते हैं कि जेनेटिकली उसकी बेटियों को ज़रा मोहतात रहना चाहिए, अपने आप को स्क्रीन करते रहना चाहिए. What about the men in her family? Are they at risk, number one? And number two, can men get breast cancer? Absolutely, men can get breast cancer. For every 100 women with breast cancer, there is one male breast cancer. And most of the time, इनकी genetics होती हैं. So we usually identify BRCA1, BRCA2 genes इनमें. और ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर इनके साथ एसोसिएट होता है, बल्कि पैनक्रियास जो लबलबा कहते हैं उसका कैंसर होता है, प्रोस्टेट का कैंसर होता है, वो भी इससे एसोसिएटेड होता है. सही. तो अगर किसी मेल मेंबर में कोई ऐसा एबनॉर्मल लंप हो जाता है, स्पेशली वन साइड पे होता है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए और उसको अप्रोप्रिएट, और ना सिर्फ ये ज़िम्मेदारी है उस इंसान की जिसको तकलीफ़ हो रही है, बल्कि टू द केयर गिवर, टू द मेडिकल एक्सपर्टीज़ दैट दे आर गोइंग टू, that they should be aware of it, they should be sensitized to this issue. And
anytime somebody comes with a complaint and you cannot identify it, or you can't really put, with images, ultrasounds, you can't figure out what's happening, it's always good idea to call that person back. Yes. To see if that has cleared up or not, because that's sound good medical practice. क्या बदले फॉलो अप करके देख लें कि अगर कोई एलमेंट है और आपको समझ नहीं आ रही, उसको बुला के देख लो फिर से खत्म हुई है कि नहीं है कि और नहीं है तो then phone a friend, call your colleagues and get them the right the diagnosis. I think there is an element of shyness and shame जिसको शायद हमने cover नहीं किया है अभी तक की अपनी गुफ्तगू में. When it comes to even women, when they have to self-examine or go for screening, even a man. So, I mean, just the fact that it's breast cancer and it involves breast self-examination, a lot of people feel shy. I think Dr. Azmina knows we have lot of families. Suppose, as you were saying, the mother has breast cancer and she is suppose BRCA positive. She may pass on that gene to the children. Males can also be BRCA positive, but they may, by virtue of being male, they may not exhibit the disease, but males can then pass on that gene to their daughter, and daughter will be at a higher risk. So, males can be a transport mechanism for passing on to the genetic mutation that they can have. But once you see a male member, and if you see nowadays, I have seen few males जिसकी दोनों side पे है, they all have a genetic mutation. Wow. So, if the family member has been diagnosed with genetic mutation, I think the males and females of that family members, children or siblings must be screened for that genetic mutation. So, we do genetic testing now, and anytime a person comes back positive, we do what is called a cascade testing of the rest of the family members free of cost. और फिर उसकी implications ये है कि ना सिर्फ हम उनकी स्क्रीनिंग और प्रोएक्टिव अर्ली स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं. मेल मेंबर्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं कि स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए, फीमेल्स के लिए गाइडलाइंस डिफरेंट है कि कब स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए, और प्लस वो जेनेटिक्स आइडेंटिफाई करके हम उसकी ट्रीटमेंट भी मॉडिफाई कर सकते हैं. कुछ मेडिकेशंस हैं जो उस जीन्स के लिए काम करती हैं, वो भी दे सकते हैं. Which brings me to the subject of adequate treatment as well. यानी जब आप बात कर रहे थे, can there be targeted adequate treatments which are different from just a surgery or chemo? Right. So हमारे 70% of the patients are what is called hormone positive breast cancer. जब hormone positive का मतलब होता है they're driven by hormones and they're fueled by hormones. Now, if we block those hormones, okay, we block the targets, we block the production of the hormones, and then we add something else to have an added synergistic effect on that, तो वो हमें ज़्यादा कैंसर किल देती है. और बल्कि स्टेज 4 डिजीज़ में देखा गया है कि जहाँ कीमोथेरेपी इन पेशेंट्स को देते हैं जो कि हार्मोन पॉजिटिव है, वर्सेस हम हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी देते हैं, उसका सेम रिज़ल्ट है. In fact, you can protect these patients from getting the chemotherapy. You can delay giving them chemotherapy in certain cases. So, somebody who has a locally advanced hormone positive disease, a lot of surgeons would send them to us. Isko chemotherapy do, and we would say like, this is 5 years ago we should say, नहीं isko chemo की ज़रूरत नहीं है, इसको हम tablets दे सकते हैं. तो and then people also have this notion कि अच्छा tablet देंगे तो कैसे फ़ायदा करेगी? You know, they think क्योंकि that जहन में आता है कैंसर को सोच के aggressive approach होनी चाहिए. There's a bigger bang with the chemotherapy, right? So, and we said, नहीं, wait करो, have confidence in us, have trust in us. और ये किस किस्म के candidates होते हैं? Are they just like, who are the most suitable ones for this? They have to be younger, the detection has to be at an earlier stage. No, so these can be well advanced disease. These patients can have disease in the bones, they can be in the liver, they can be in the lungs, and they come with stage 4 disease. But then you also select out these patients. These are patients who most of the time, you know, they have disease in the breast, and we do scans and they will have problems elsewhere also, which comes as a surprise to them. But then the silver lining in this is that we can give them hormonal therapy, we can give them, which is actually anti-hormonal therapy. It's not hormone replacement therapy, which people think कि हम उनको targeted therapy और hormonal therapy का combination दे सकते हैं, which, you know, our goal is to have a sound oncological treatment along with preservation of function.
If I may probe you a little more on this, because आपने बहुत दफ़ा इसमें जब हार्मोन का जिक्र किया, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स में से कई ऐसी ख़वातीन हैं जो बड़ा कॉमनली सुनती हैं कि देखें उनका पीरियड साइकिल सही नहीं है बिकॉज हार्मोन्स आर इम्बैलेंस. सो इज़ दैट यू नो अ predecessor? So that's a different thing. कोई इसमें connection नहीं है. Okay. That's a completely different thing. Okay. So if you have PCOS or stress factors, do they eventually lead you towards cancer, Dr. Rufina? When we say hormone, so these are hormone dependent. आप उसको जो दे, this is called hormone therapy, but actually you are blocking the effect of Just hormones. like you, yes. Okay. Either you are blocking at the cell level, or you are cutting off the production of the hormones. So that's the reason she said कि hormonal therapy does not mean कि you are giving them, like you, as I said earlier, hormone replacement therapy. आपने जैसे कहा कि HRT लेते हुए ख़ास तौर पे अगर आप पेरीमेनोपॉजल हैं, PCOS हैं या फिर आप मेनोपॉजल भी हैं, ख्याल करें because eventually this excess or this replacement can cause you. That is the two female hormones, estrogen, progesterone. These are the drugs which are anti-estrogen, actually तो वो anti-hormonal therapy. Actually we call it hormonal therapy, but actually it is cutting off the effects of hormones. The only reason it's called hormonal is because it needs to deal with hormones. लेकिन इसकी excessive production नहीं बल्कि blocking that can help you in the treatment. These are called the targeted treatments that are now available for breast cancer. तो अगर मैं इसका एक अहाता करूँ अभी तक की हमारी गुफ्तगू का, it's so important to understand कि वो जो एक आपका fear inducing एक ही अंदाज़ है इमेजिन करने का कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो आपको फौरी तौर पे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ दे कीमो से गुजरना पड़ेगा. प्लीज़ डोंट लेट दीज लिमिटिंग थॉट्स होल्ड यू बैक. Early detection and adequate treatment can really save lives and perhaps is the only known cure for breast cancer. What are your thoughts on this statement, Dr. Rufina? Yes, because ये जो stigma है, breast cancer means end of life. Yeah. Nowadays, if you see in the West, if you pick it up at a relatively early stage and you adequately treat it according to the biology and everything, according to the recommendations of the concerned doctors, yes, you can use the word cure for the cancer, and they are now more and more cancer survivors you see, and they are living a normal life like any diabetics, hypertensives and other than. But yes, you have to still work on breast self-examination, getting to the doctors, diagnose. I think fears से बाहर निकले. It's a treatable disease, and if you pick it up early and appropriately treat. But I'm very confident. मुझे लगता है कि पाकिस्तानी women particularly are very, very courageous. You're right कि the other factors really help her to you know, maybe go over the limitations faster and you know in a more strong fashion. लेकिन अपने आप में भी ख़वातीन बहुत strong है. Dr. Azmina, if I may request you for a last minute motivator now before we close this conversation. Why should women not lose hope even if they have a cancer diagnosis? So because there is treatment available, there are doctors available who can guide you, you have facilities, you have support system available, and of course it is going to be a rough journey, but I'll tell you, the people who come out of it and the people who make it through, they come out as a very evolved person. They are then able to identify who are their friends and who are not, who are the well-wishers, who are the ones who are the concerned ones versus the curious ones. So I think it's a journey that we have to take it with the family, with the concerned medical personnel, with you know, there is lack of a lot of जैसे हमारी social services, welfare services, और वो सारी चीज़ें नहीं हैं, but this is a doable thing. And Allah ka shukr hai, a lot of patients when they go back, they at least they have the trust and the confidence that they are being looked after, they are being cared for, and as well as they would be anywhere in the West. So I think that is something that we can as individuals offer to our patients. Absolutely. Thank you so much, Dr. Azmina. Thank you very much, Dr. Rufina, for being here with us.
लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस, और जिस तरह आप लोगों का ख्याल रखती हैं, ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के लिए है, जस्ट लाइक यू आर द सेंटर ऑफ लाइफ फॉर योर फैमिलीज़, फॉर योर कम्युनिटीज़, आई थिंक यू डिज़र्व द सेम सेल्फ कंपैशन दैट यू सो फ्रीली गिव आउट टू अदर पीपल. तो अपना ख्याल रखें, सेल्फ एग्ज़ामिन करें, और अगर इस तरह की कोई चीज़ आप डिस्कवर करती हैं जिसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, वंस अगेन नॉट ऑल लम्प्स आर ब्रेस्ट कैंसर, बट एवरी लम्प रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट. तो ज़रूर इसके लिए डॉक्टर से रुजू करें. कैंसर भी खुदा ना खास्ता अगर आपको डायग्नोज हुआ है तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि इट इज़ द एंड ऑफ लाइफ. देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, एंड वी विश दैट you will find that courage and that strength in yourself to charge forward. With this conversation comes to a close. अपने comments और feedback हमें भेजिएगा. If there have been aha moments, feel free to share it with people who can benefit from this conversation. और साथ ही अगर आपके भी कोई सवाल हैं, you can leave that in the comments and our teams are going to get back to you. Until next time, take good care of yourself. खुदा हाफिज़.